So from the lesson of agriculture, we are proceeding further. Our next topic is technological and institutional reforms in agriculture. Why these reforms are necessary? What is the need of these reforms? India is a country of very big size of population, right? And so we need lot of agricultural production. A little production can't fulfill the need of the country. Why? Because our country is a country of very dense population and we need lot of food, lot of vegetables, fruits to sustain our population. Due to this reason, the technological and institutional reforms are essential. By introducing technical and institutional reforms in agriculture, we have introduced the Green Revolution. How Green Revolution was started? Green Revolution is the result of the technological and institutional reforms in agriculture. See a few lines here. It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. Sustained uses of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agricultural development. That means for agricultural development, we need technological and institutional reforms. In spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depend on monsoon. Now, you are seeing here in these lines that what is the need of technological reform in agriculture? Because Indian farmers were depending on monsoon and monsoon is not reliable. Monsoon is sometimes earlier, monsoon is sometimes late, and the rainfall of the monsoon is also not evenly distributed throughout the country. So, for this reason, we have to develop our irrigation system. Irrigation system is very essential for the development of agriculture because we can't depend on monsoon rain because monsoon is unreliable. Monsoon is not very reliable and the rainfall is also not equally distributed throughout the country. Then natural fertility in order to carry on their agriculture. We have to increase the natural fertility of the soil also. For growing population, this poses a serious challenge. Agriculture, which provides livelihood for more than 60% of its population, needs some serious technical and institutional reforms. As I have told you earlier, that to increase the productivity of land, India needs technological and institutional reforms in agriculture. Right? This includes many things. Technological reforms means improving the agriculture on the scientific basis, on the modern technology basis, like using all modern techniques of agriculture, using modern equipments of agriculture, like harvester, combine, tillers, tractors, pumping set, generators. All these are utilized to improve our agriculture. We need the support of these machine tools to modernize our agriculture and to get more production, right? And in the same manner, we need HYV seeds, we need pesticides, chemical fertilizers, insecticides. All are the examples of technological development in agriculture. HYV seeds had played a great role in improving the agriculture of our country. HYV seeds. Because due to the introduction of HYV seeds, our agricultural production has increased fourfold. During the time of independence, about the year 1950-51, just after independence, India has only 50 million tons of food grain production. But in the recent years, it has increased a little bit more than 4 times of 50 million tons.
Suppose India produces about 260 million tons of food grains. This is the approximate data of total food grain production. So the food grain production has increased more than 4 folds. समझ गए कि इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था इंडिया में कितना था अबाउट 50 मिलियन मेट्रिक टन्स था और वो जाकर के कितना बढ़ गया अभी 4 गुना से भी ज्यादा जैसे 250 टू 260 मिलियन मेट्रिक टन्स तक पहुंच जाता है ये प्रोडक्शन मिलियन टन्स का है ना तो ये सारा हम लोग अब शॉर्ट में अपने आंसर में लिखेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो व्हाट आर टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर मैम एक बार रिपीट करिए व्हाट आर टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल ये पेज नंबर देख रहे हो पेज नंबर 42 सेकंड कॉलम यस मैम रिफॉर्म्स के बाद इन एग्रीकल्चर what are the technological and institutional reforms in agriculture have you written the question यस मैम रिफॉर्म्स के बाद क्या बोले what are the technological and institutional reforms in agriculture now you start writing answer ठीक है जो हम डिक्टेट करा रहे हैं ना समझते चलना और लिखते चलना उसको हम लोग बाद में फिर से डिस्कस करेंगे लेकिन अभी बहुत अच्छे से उसका नोट्स बना लो पहले as India is a country of very dense population as India is a country of very dense population कंट्री के बाद we require lot of food grain production we require lot of food grain production the union lot of next line we provide we need मैम एक बार पूरा रिपीट करिए ना अच्छा पहले तुम रिपीट करो as India is a country repeat the answer as India is a country of very dense population we required lots of food grain production have you written all of you yes ma'am now write after full stop you write the union and the state government the union and state government has initiated many programs, many developmental programs for agriculture. The union and the state government have initiated many developmental programs in agriculture. Many के बाद Developmental programs in agriculture. Point number 1. Yes, ma'am. To modernize agriculture,
To modernize, first point, to modernize agriculture, many technological reforms. To modernize agriculture, many technological reforms are introduced, like to modernize agriculture, many technological what have you written? Many Reforms are introduced like introduced, like improved system of irrigation, improved system of irrigation, comma, system of irrigation के बाद improved system of irrigation, comma, use of chemical fertilizers, use of chemical fertilizers, pesticides, weedicides, etc. Chemical fertilizers, pesticides, weedicides, etc. comma, pesticide के बाद weedicides, WEED, weedicides, etc. Modern equipments of agriculture, modern equipments of agriculture, modern equipments of agriculture. Equipment of Within bracket you write. yes ma'am. Prachi, from Prachi's side, noise is coming. Are you listening, Prachi? Yes ma'am. You mute yourself. So you have written about many agricultural equipments. Within bracket you write some names of the equipments. है ना? एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट में क्या क्या लिखेंगे? कुछ इक्विपमेंट्स के नाम लिख लो. जैसे लिखो हार्वेस्टर, कंबाइंस, हार्वेस्टर्स, टिलर्स, बस 2-3 लिख लो. हार्वेस्टर्स, टिलर्स, ट्रैक्टर्स, जनरेटर्स, एक्सेट्रा. ट्रैक्टर्स, जनरेटर्स, बहुत सारी चीजें हैं, पंपिंग सेट है ना, बहुत सारी चीजें. तो बस 2-3 नाम लिख लो ब्रैकेट में. तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स के कुछ मेंशन कर लिए नेम, है ना. एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स. ब्रैकेट क्लोज करने के बाद लिखो एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स. मैम हाई यील्डिंग के बाद वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, इसी को कहते हैं HYV. ओके मैम. HYV सीड्स कहते हैं. तो देखो ये शॉर्ट में तुमको सारा टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स का ये पॉइंट लिख लिए शॉर्ट में, है ना. और अब हम जो लिखने जा रहे हैं वो है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं जिसको हम 1 by 1 लिखते हैं. ये तो पहला पॉइंट हो गया. अब पॉइंट नंबर 2 लिखो. पॉइंट नंबर 2, start writing. Point number 2, consolidation of land holdings, consolidation of land holdings
and abolition of zamindari system मैम होल्डिंग के बाद लैंड होल्डिंग एंड एबॉलिशन मतलब समाप्त करना एंड एबॉलिशन ऑफ zamindari system was introduced. मैम एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम ब्रिटिश टाइम में था ना जमींदारी सिस्टम, उस सब चीजों को एबॉलिश किया गया. एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम फॉर द बेटरमेंट ऑफ फार्मर्स, फॉर द बेटरमेंट ऑफ फार्मर्स. थर्ड पॉइंट, provision of crop insurance. Are you writing third point? Yes, ma'am. Provision of crop insurance against drought, flood, cyclone. इंश्योरेंस के बाद Provision for crop insurance against drought, flood, cyclone, fire and disease. मैम इंश्योरेंस के बाद Cyclone, fire and disease. Insurance against drought, flood, cyclone, fire, etc. So you have written 3 points. अब ये देखो इस थर्ड पॉइंट का मीनिंग क्या हो गया कि फार्मर्स के क्रॉप्स का इंश्योरेंस कराती है गवर्नमेंट, है ना. क्यों? क्योंकि कभी क्रॉप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, और डिस्ट्रॉय होने का रीजन क्या क्या होते हैं? फ्लड आने से, साइक्लोन आने से, फायर की वजह से, या उसमें डिजीज मतलब कोई पेस्ट बीमारी, कोई कीड़ा लगने से वो से क्रॉप्स खराब हो जाती है. तो उसके लिए फार्मर्स को सारा लॉस नहीं सहना पड़े, इसके लिए उनका क्रॉप इंश्योरेंस कराया जाता है. तो ये गवर्नमेंट का प्रोविजन है, क्रॉप इंश्योरेंस. प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट. ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना, अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है तो क्रॉप्स खराब हो जाते हैं. या एक्सेस वाटर मतलब फ्लड हो जाना. ये सारे रीजन है जिसके वजह से क्रॉप डिस्ट्रॉय होते हैं. तो उसको सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है फार्मर्स को. तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है एग्रीकल्चर में ये. नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 4, ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्रोवाइड लोन. ग्रामीण बैंक क्या क्या लिखे? ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रोवाइड loan at low rate of interest. At low rate of interest. How many points have you written? मैम 4. हाँ. Now write 4. ये लिखो point number 5. मैम पॉइंट 4 एक बार रिपीट कर दीजिए ना. हाँ, point number 4. यस मैम. ग्रामीण बैंक्स, यहाँ देखो इसी पेज में ये तुमको दिखा रहे हैं इंडिकेटर से. ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रोवाइड लोन एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो ये भी फार्मर बेनिफिट के लिए हो गया, है ना. और फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर, सुमित क्वेश्चन इधर आ गए. और ये नेक्स्ट पॉइंट, किसान क्रेडिट कार्ड. सी दिस पैराग्राफ, किसान क्रेडिट कार्ड, विद इन ब्रैकेट राइट KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, कॉमा पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS,
within bracket you write PAIS. Personal Accident Insurance Scheme, PAIS, are some other schemes introduced by the government of India. Are some other schemes introduced by the government of India. These are also for the benefit of farmers. Next point. Weather bulletins. Weather bulletins. WEATHER weather bulletins, BULLETINS, weather bulletins and agricultural programs are introduced on radio and television. Weather bulletins and agricultural programs are introduced on radio and television for the farmers. Next point. This is the last point. Next point. The government announces minimum support price. The government announces minimum support price to check the exploitation of farmers. To check the exploitation of farmers by the middlemen. To check the exploitation of farmer by the middlemen. So how many points have you written? Total number of? 7. I'm 7. Now listen, sometimes only technological reforms are asked. But generally, we have seen that in the last few years that both are in a combined manner, like technological and institutional reforms are asked together. If it is asked in a separate question, then you have to write in more detail. And if institutional and technological reforms are asked together in the same question, then you have to write all these together, as I have given you the notes today. Technological reforms means reforms in irrigation, reforms in modern tools and HIV seeds, pesticides, etc. These will be written in the technological reforms. And institutional reforms means abolition of Jamindari system, then land consolidation, introduction of KCC, PAIS, all these come under institutional reform. Loan facility, all these come under institutional reform. So some technological and institutional reforms are introduced for the betterment of the farmers. Let us see this paragraph, last paragraph here. See this. Kisan Credit Card, Personal Accident Insurance Scheme are some other schemes introduced by the Government of India for the benefit of farmers. Moreover, special weather bulletins and agricultural programs for farmers were introduced on radio and television. है ना, तुम लोग भी देखे होगे कृषि दर्शन ये सब प्रोग्राम होता है ना रेडियो पे टेलीविजन पे, तो ये फार्मर्स के लिए होता है. And the government also announces minimum support price, remunerative and procurement prices
for important crops to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen. मिडिलमैन जो होते हैं ना वो फार्मर्स से बहुत कम में खरीदेंगे और अब ज़्यादा बेनिफिट में अपने मार्केट में सेल करेंगे। तो इन सब चीज़ से फार्मर्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करती है। तो वो ये प्राइस ओपन हो जाता है जिससे फार्मर उससे कम प्राइस में अपने क्रॉप्स को नहीं सेल करेंगे। ठीक है ना? अब तुम लोग में से कोई एक वो सारा रीडिंग करके सुनाओ तो कितने पॉइंट लिखे अभी, जरा शुरू से अपने आंसर को रीडिंग करके सुनाओ। As India is a country of very dense population, we required lots of food grain production. The union and state government has insisted many development programs in agriculture. Point 1. To modernize agriculture, many technological reforms are introduced like improved system of irrigation, use of chemical fertilizers, pesticides, etc. Modern equipments of agriculture like harvester, tractors, generators, and high yield varieties of seeds. बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, जैसे थ्रेशर है, कंबाइंस है, टीलर्स हैं, बहुत सारे नाम हैं। और यहाँ कुछ मशीन के पिक्चर भी दिए गए हैं तुम्हारे बुक में, वो भी देखेंगे हम लोग, है ना? आगे पढ़ो। Second point, consolidation of land holding and abolition of zamindari system for abolition for the ABOLITION, abolition. Abolition means to end. For the betterment of farmers. Third point, provision of crop insurance against drought, flood, cyclone, fire, and diseases. Fourth point, Gramin banks, cooperative societies provide loans at low rate of interest. Fifth point, Kishan Credit Card, KCC, Personal Accident Insurance Scheme, PAIS are some other schemes introduced by the Government of India. Sixth point, weather bulletins and agricultural programs are introduced on radio and television for farmers. Seventh point, the government announces the minimum support price to check the exploitation of farmers by the middleman. ठीक है, तो तुमको हमने बताया ना कि अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिर्फ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स लिखने के लिए, तो उसमें तुम क्या लिखोगे? वो सारे पॉइंट लिखना डिटेल में, जो फर्स्ट पॉइंट में तुमको हमने शॉर्ट में लिखा दिया है उसी को इलेबोरेट कर दोगे कि इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाने से क्या क्या फायदा होता है, हम लोग ड्राई लैंड को भी यूज कर लेते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाता है अगर इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ाते हैं। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ 1960s 70s के बीच में, तो वो कैसे हो सका? वो इरिगेशन की वजह से ही हुआ। Why green revolution first introduced in Punjab and Haryana? Because of the irrigation facility, है ना? Bhakra, Nangal Dam and the network of canal system in that region helped in introduction of green revolution in the northwestern part of India first. ठीक है ना? पहले उधर ही पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी से ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और वीट और राइस का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा। पहले वीट का प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है ना, 60s में, और उसका 70s में आते आते राइस का प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ गया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरुआत ही हुआ इसी तरह से, जो टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं एग्रीकल्चर में, उसी के वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हुआ ना। तो यहाँ पे देखो, देयरफॉर, आर यू सीइंग हियर? Yeah. Therefore, in 1980s and 1990s, a comprehensive land developmental program was initiated, which included, देखो लैंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम पहले गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया जिससे कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सके, which included both institutional and technological reforms. और वही सारी चीजें हैं कि प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड एक्सेट्रा, देन ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सब लोन देने के लिए
ठीक है। तो ये सारे, और सबसे पहले जो ब्रिटिश टाइम में क्या था कि जमींदारी सिस्टम था जिसमें फार्मर्स को बहुत ज्यादा रेवेन्यू देना होता था, फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही सबसे पहले एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया। ये जमींदारी सिस्टम को हटा दिया गया जिससे फार्मर्स को बहुत बेनिफिट मिला, बहुत सहूलियत मिली, है ना। तो ये सारी बातें तुमको इसमें लिखना है। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये 2018 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, फिर ये 2012 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आता है।